પ્રધાનમંત્રી મોદી અને બાઇડન વચ્ચે બેઠક। જી હા, જાપાનના ટોક્યોમાં યોજાઈ દ્વિપક્ષીય બેઠક। મહત્વનું એ કહી શકાય કે સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કે અત્યારે જો બાઇડન અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં નરેન્દ્ર મોદીનું એવું પણ કહેવું હતું કે જો બાઇડનને મળીને ખૂબ જ આનંદની લાગણી થઈ તો જાપાનના ટોક્યોમાં આ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી। મહત્વનું એ પણ છે કે જો બાઇડન અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે બેઠક મળી હતી તો જાપાનના ટોક્યોમાં આ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી। જાપાનના ટોક્યોમાં આ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજાઈ તેમાં નરેન્દ્ર મોદીનું એવું પણ કહેવું હતું કે જો બાઇડનને મળીને ખૂબ જ આનંદની લાગણી થઈ। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defense and other defense and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people to people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी।